नमस्कार, आप सबका स्वागत है। प्रयागराज की इस पवित्र भूमि पर महाकुंभ का जो अवसर हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, आफ्टर 144 years, the whole world is celebrating this beautiful occasion. 144 वर्ष के बाद इस महाकुंभ को हम देख रहे हैं। हमारी कितने सौभाग्य की बात है। और महाकुंभ के ब्रह्माकुमारिस कैंप में, फ्रॉम ब्रह्माकुमारिस कैंप in Godlywood studio एक मुलाकात program, we have so many great souls coming on the show and they are sharing their experience. So today also we have our esteemed guest present from Karnataka, Mangalore, from Om Shri Mutt. We have here on the show Om Shri Swami Vidyanand Saraswati ji and Om Shri Shiva Janana Mahi Saraswati ji on the show. You both are welcome on the show. आप दोनों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है. Swami ji, we would just like to know about your spiritual journey, how you started this spiritual life. Please share with us how you started, how you came into this spiritual path. Three is the final spiritual word as concerned to the Shodashi. So the Adi and Andhya, everything is there in Om Sri Mutt. So we are observing the Advaita Siddhanta and Sri Vidya, Sampradaya and Rishi Parambara. So we are worshipping the oneness of all, that is from where the universe is arise, and which is the most microscopical point of the energy. It is none other than the creation of this, the entire Panchabhuta and Navagraha and Tithi, Nakshatra and every all. The entire universe is raised from it. It is the Ulpati Hedu. Ulpati Hedu means it is Prabanja Utpatti Hedu. Means the reasons for the introductions or the formation of the universe is this energy that is known as the Amma, because it is creating all things. So that is Shakti. That is, we are considering that this energy is in the 9 segments. It is known as the Sri Chakra. So we are worshipping Sri Chakra and Sri Chakra Parambara. As per our Ishi's words, once Sri Chakra, it is as equal to performing the 108 yagas. And another thing is roundabout we are believe that the 3,300 crore gods are there in different bhava as per our Bhavana Upanishads. All these gods are emitting the spiritual inspiration from one point. So that is the Sri Chakra and Sri Vidya, and that is known as the Sri Lalita Mahatripura Sundari. It is as concerned to the our mutt. And as concerned to the entering of this phase, it is by hereditary inspiration. My Guruji and my father was the Guruji as well as the mother, and our parambara is different. We are the couples. As in where is the Shiva, there is a Parvati, where is the Vishnu, there is a Lakshmi, and where is the Brahma, there is a Saraswati. So, as per the meaning of the Saundaralahari, the first sloka, without Shakti, there is nothing is there. So, Shiva is existence only with the weekend of the Shakti. So, in the same way, without the Sri, without the Shakti, nothing is there in the universe. Yes. So, we are believes that in the Sri Chakra, there is 9 segments, the 4 representing for the Shiva and 5 representing for the Shakti. So, in that way, in our mutt, only the married couples can come to the Sannyasa Diksha. Without the Brahmacharis are not able to come to this point because it is belongs to Sri Chakra Aradhana. That is as concerned to our mutt. And then as concerned to our inspiration, in the previously in Purvasarma, I am running an education institution for the 35 years. And I started with 5 students from the LKG. And my inspiration is giving jnana to others. And at that time, in my Purvasarma, I have started an institution and give the maximum knowledge to the students. And I started education institution from LKG to PG level and different degree segments and different PG segments and
different courses like beard and others. Okay. And after the 35 years, I have got the inspiration from the Amma. Okay. And at that time, I am observing that my Nityanushtana. After that, I have got the Pratyaksha Darshan of the Adi Shankaracharya. And give me 3 words. From that point, I have abandoned and I have handed over all my institutions, and we both entered into the sannyasa as per the traditional system of Mandra Diksha and Vidarohana, everything. Now, we are doing the main 3 things. That is the purification of the mind and purification of the thoughts. When the mind and thought become purified, generally, automatically the action will be purified. When the action will be purified, the human beings will be the noble. When the noble human beings were in the society will be peace and love and everything. Yes. That is the concept of the Sanatana Hindu Dharma. For that we are working now. And in the same way, we are motivating the people. Everything is Advaita Siddhanta. What we are seeing in our naked eyes are only the imitations. And don't believe everything what is we see. And we have to be asked to us, who am I? So one can get the answer, I am a big zero. Yes, definitely. So the thing is that some inspiration is there. That is Atma. So what is Atma? Atma is a glittering light that is moving one place to one place so that we can see. Once we look in the sky, we can see that there is a sky, there is a wall like blue. But that is the capacity of our naked eye. Before that, there is microscopically we are seeing there is a blank place. In the same way, what we see in the world, that is only the imitation. That is our eye, a naked eye have no capacity to see that thing. So something is behind this. So that is, we have to be think for what purpose we got this life. Yes. The realization of the purpose of the life is the aim of the life. So, as a Guruji and as a spiritual leaders, it is our duty to motivate the people and let them know what is the purpose of life. So, then as per our Hindu Sanatana Dharma, the Nishkama, without desire we have to pray the gods. And when we are praying the God for the demands, it is not as per the Sanatana Hindu culture. So we have to pray, we have given the life. And what is my purpose? What is my destiny? Let me know the destination. That is a jnana. So we have to pray for the God for the jnana siddhi. It is our motive. Now we are working under there is a organization named Akhila Bharata Samsamadi. And on the basis of that, we are motivating to coordinate the different methods, different paramparas are there, and different way of worships are there. Different Hindus organizations are. We are trying to connect and join together all the saints together and to make a final sound and a Vishwaguru for the Hindu Sanatana Dharma. That is our main motive. Coordinating all the saints of different varieties, different sampradayas and different paramparas together and to make and work for the main aim as that is Hindu Rashtra. This is our main aim. Ji Maharaj. Yeah. Ji. Very, very nice to hear this, Maharaji. And like you said, our main motto of human life, we have forgotten in this Kali Yuga. And we are so engaged in materialistic world that we are forgetting God. And we are not devoting to God. So this is really beautiful. Like you said, we are zero. We are nothing. And what the eyes can see is very limited. We cannot see the metaphysical things. And, we are just trying to see the God. Like, okay, is God, can he appear in front of my eyes? Then only I'll believe that God is there. So it's very beautiful how you said that, we have to just need to have, what is the purpose of life? We need to just find out that. That is the main motto of getting this human body. So this is really wonderful, Swamiji, what you said. And Swamiji, so I would just like to know, in Mahakumbh, we are just meeting in Mahakumbh. So what is your experience of this beautiful gathering? So this is the world's largest gathering which we are having. So there is no place happening this gathering anywhere in the world. So this is a really proud thing for India. And I would just like to know your experience, like how is the feeling to just see this beautiful scene? Everyone is gathering for the spiritual purpose. So that is really great. So everyone is thinking about God at this time. So Swamiji, I would just like to know,
your experience, you can just share with us in Mahakumbh, and also coming to Brahmakumaris. You can please just tell in a few words. Yeah. Yes, before telling about the Mahakumbh, as about the materialization of the human beings, suppose a child is studying in the LKG, suppose we say about the elephant, he can't understand the elephant. So we have to be show a picture, then we have to be clarifying that is a elephant. In the same way, in the ideal is necessary for to say it is a god, it is inhuman, then only they can be. So we are worshipping the ideals as the name of the god. That is the systems of our temple. Another thing is that the havanas means homas, and the prayers, the what way we are chanting the mantras, there is we are opening the mouth and closing the mouth, there is a microscopic vibration is coming. That vibration is as a resting point is there for the vibration things, that is creating energy. That is by the giving the prayers they are getting, or chanting the mantras, or chanting the slokas, or chanting the bhajanas, they are getting the energy. And another, we are doing the many homas. Mataji is doing all the homas there, and round about the homas we are, yes, more than 2,500 homas are done in the purpose that is we are doing only the Sri Chakra homas, and that times we are doing Gana homa and Sri Chakra homa, everything is one. And what we are doing is, suppose we are giving some firewood or some that something as a harvest for the dhyana, and the energy is hidden in there, and when it burns, the energy comes out, that is as dissolved into the natural. When we are breathing and we are receiving the natural energy, or by knowing or unknowing, the experience of the spiritualism will be getting them, and that will be directly or indirectly purifying the mind and thought of the humans. That is about that. And as concerned the Mahakumbh, this is one of the largest festival of the world, and this is happened only after 144 years. And what is happening is that you might have heard that the once when Shiva Parvati marriages happened, and every god has gone to the northern side, and so Agastya, the Rishi Agastya was sent to the southern side to balance our nation. That is not for the geometrical balance, but for the cultural balance of the Aryas and Dravida culture. And now what is happening is, all the ways, all the Swamijis are there. Their aim is only one, to find out the Paramatma. And as absorbing the light from the most microscopic level, and to receive and to observe and to motive. That is the Dharma. So they are in different ways they are absorbing. Suppose in our nature there is a plant is there, and there is animals are there, and human beings are there. All are taking the oxygen, and all are taking the food and making the starch and making the energy and making growing. And the methods of receiving the food is in different ways. Yes. In the same way, all the Swamijis in different paramparas are receiving the Paramatma's energy in different ways, and they are observing, they are receiving, they are maintaining, and they are hand over into the new generation. So here, everything is come into one point. And once a common people is entering there, he will get all the energy microscopically into his mind and into his thought. So it is the unexpected experience and unexpected thing for the human beings. So it is we are doing not for the purpose of the one community, for the entire community. Logo Samasto Sugino Bhavan. This is the purpose. And as concerned to the Brahmakumaris, I had learned about the Brahmakumaris, and the concept is very nice. And what is here shown is very good. And what they means, the emotion should not be overcome the mind. The mind is the master, and the emotion must be the slaves of the mind. That was the main idea. Yes. And they tried a lot in different variety, different places, and they are trying to motivate in the different ways. Here, this very fantastic one. They are showing different methods, that is very simple methods to realize the common people. Sometimes we are writing the books that only the persons, those who can know reading, that can only read. And suppose we are giving the speech, someone cannot be understand because the grasping power may be low. But this is in the
way of demonstration. Hmm. This demonstration may be attack their mind, and they can think about what evil thought is in my mind and what I have to be removed. This is a very fantastic exhibition. I'm really appreciating you. I'm very good opinion about these activities. Thank you so much, Swamiji, for your good words. And it's very wonderful. Like, our ultimate aim is God. And it's like, there are different paths we can reach to the God. So here also we can see all of us have gathered here. There are different spiritual institutions in India. So we are just getting to know all the spiritual institutions. And it's like, we are all united together. So, but ultimate aim is God. The paths can be different, and we have to reach the destination, which is the ultimate God. So, Mataji, I would just like to come to you, and I would just like to know your experience. You can speak in Hindi also. हिंदी जी, ओके। तो माताजी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आपका कैसा अनुभव रहा है और आपकी आध्यात्मिक जो जर्नी है कैसे शुरुआत हुई। हम बहुत इच्छुक हैं इसके बारे में जानने के लिए, तो आप प्लीज बताइए। मतलब मैं छोटे में प्रार्थना पूजा उसके बारे में बहुत आदत था। फिर भी सादा फैमिली, उसमें उतना ज्यादा पूजा प्रार्थना के बारे में जानकारी वाला नहीं है। फिर भी मेरा रास्ता से ऐसा ही जाकर प्रार्थना पूजा पूरा कर रहे थे। उसके बाद गुरुजी साथ में था और गुरुजी के साथ जुड़े हुआ। उसके बाद हमारा गुरुजी का पिता भी, परम गुरु भी इस रास्ते में जाता था, तो पूजा करने के लिए प्रार्थना करने के लिए आदत था। तो मेरे को उपदेश दिया वैसा वाला। मैं चैंटिंग करने के लिए प्रार्थना करने के लिए शुरू किया। शुरू करने के बाद वैसा जाने के टाइम हमको ध्यान दृष्टि में देवी का दर्शन, शिव जी का दर्शन, और मैं पहले क्या था और आगे मेरे को क्या होगा, क्या करने के लिए आदत है, वो पूरा मेरे मन में ध्यान करने के बारे में टाइम में मेरे का पूरा पिक्चर मिला रहता। फिर ऐसा ही रास्ते में मैं जाके और पूजा प्रार्थना पर शुरू किया। मेरा गुरुजी है मेरा उपदेशक और दीक्षा देने वाला, और पूजा कैसा करना चाहिए, प्रार्थना कैसा करना चाहिए, वैसा ही रास्ते में मैं जाके हर पूजा दिन में 3 बार पूजा कर रहे थे। श्री चक्र नवावरण पूजा है, हमारा श्री विद्या परंपरा है, उसमें नव चक्र है। ये भूमि तक प्रकृति पर जितना देव देवता लोगों ने है वो पूरे श्री चक्र में जुड़े हुए हैं। श्री चक्र मतलब शिव और शक्ति। एक साइड में देवी का 5 चक्र होगा, एक साइड में शिव का 4 चक्र होगा, तो 9 चक्र। उसमें शिव पार्वती, उसे बिंदु पर में देखकर, उसे शिव पार्वती रूप के देखकर पूजा प्रार्थना वैसा करके जाता, और होमा, और दिन में हमारा दिन का रूटीन भी वैसा ही जाता है। उसके बाद धीरे धीरे से घर का बाकी कार्य दूर करके पूर्ति अनुष्ठान प्रार्थना और दीक्षा लेकर वैसा। और हम मेन हर एक घर में हर नारी शक्ति मतलब ललिता शास्त्र नाम का पठन करना चाहिए, वो हमारा मेन एम है। और किसी भी भक्त लोगों ने हमारे साथ आए तो उपदेश में आशीर्वचन के लिए आया, तो उससे हम लोग बोलते हैं आपको और कुछ बहुत क्षेत्र में जाकर प्रार्थना दूर दूर जाने की जरूरत नहीं। अपना घर में बैठकर कौन सा देवी का प्रार्थना करते, उस प्रार्थना मंदिर पर बैठ के उस जगह बैठकर आप ललिता शास्त्र नाम का पारायण कर दीजिए। वो पारायण ही बस आपका जीवन में क्या क्या होता है, दुख भी होता है, संतोष भी होता है, हर चीज है ना। मनुष्य का मन में क्या क्या चिंतन होता है हमको बोलने की जरूरत नहीं है, सब लोगों का है। तो वो ये प्रार्थना करके जा दीजिए, और इसमें आप क्या चाहता है। और हमको भगवान ये नहीं दिया वो नहीं दिया वो बोलने का फायदा नहीं, मतलब हमको पूरा देता है, वो देने वाला हम रिसीव करके वो फॉलो करके जाएगा तो सिर्फ हमको क्या मिला है मालूम पड़ता है, नहीं तो नहीं मिलेगा। मतलब हम टीवी में देखने के टाइम क्या देवता का मूर्ति पूरा हम लोग सामने पिक्चर जैसा मिलता है, वैसा अभी कलयुग में दर्शन नहीं होगा, मतलब अनुभूति होगा। प्रार्थना करने के टाइम हमका अनुभूति होगा, किस प्रश्न में हम क्या टेंशन में होता है, तो अन्य कार्य में होता है तो गलत होता है, ठीक होता है, और काम करने के टाइम जितना भी लॉस होता है ना, उस टाइम हम प्रार्थना करेंगे तो हमको मन में प्रार्थना करने के टाइम भगवान का एक उपदेश मिलता है। उस टाइम ध्यान में आंखें बंद करके वो चीज को देखेंगे तो बिंदु पर हम आंखें उठाएंगे तो इधर देवता का चिंतन करेंगे तो हमको ठीक से रास्ता भी मिलता है। फिर कुंभ मेला अभी 144 ईयर के बाद आ रहा है,
तो क्या है, हमारा गर्व है ये। मतलब हैदव संस्कृति में पैदा हुआ एक एक सनातनी को गर्व है ये महाकुंभ मेले का पर्व। मतलब अभी ये कलयुग में अभी ये मनुष्य लोग में चिंतन मन में एक मनुष्य के जैसा नहीं है। बहुत बहुत झंझट होता है ना, लड़की लोगों को उसका रास्ते दूसरा रास्ते पे जाता है, और संबंध के बारे में भी अच्छा से नहीं जाता है। उसके एक पर्व काल है, इधर आकर जितना साधु लोग आता है उन लोगों के मिलकर ये पावन भूमि पर उसका पैर भी जुड़ेगा तो वो आशीर्वाद ही बस ये कलयुग में अभी हुआ वाला दुरंत छोड़ के अच्छा वाले रास्ते में जाने के लिए वो हम जितना यूटिलाइज करने का होता है उतना यूटिलाइज कर देने का, हर एक आदमी के। मतलब हाँ, सब लोगों के मंदिर बनाने का नहीं होगा, फिर भी अब आप उसका मन और ना मंदिर पर भगवान का बिठा सकता है। मंदिर बनाने का वह वाला लोग बनाते हैं वो ठीक है, हर एक व्यक्ति उसका मन में देवता का प्रतिष्ठा करने का। हम एक चेड़ी रखा गया तो वो वेरांडा पर उसका पानी भरना चाहिए ना, वो तो उसमें फूल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ऐसा रख कर उसको फूल मिलेगा ना, वो मैं प्लांट उधर रखा है फूल होगा ऐसा सोचने का नहीं, पानी भर देने का धूप देना चाहिए। वैसा ही हमारा मन में भी भगवान है, हर एक मनुष्य को शरीर में देवता बैठा है और उसको प्रार्थना करके उस मूल मंत्र जब प्रार्थना करेंगे तब तो वो शक्ति हमको आशीर्वाद देगा, तब तो वो शक्ति हमको रास्ता दिखाएगा। वो हम लोग करना चाहिए। अभी क्या गलत हुआ वाला लोग क्या वाला है, और इधर आकर स्नान करने के टाइम जितना गलती हुआ वो पूरा शुद्ध करने का, और कलयुग में हमको एक मौका मिला है, ये फिर आगे कभी मिलेगा, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, कलयुग कब तक होगा हम लोगों को किसी को भी मालूम नहीं है। और अभी मिला है वो मैक्सिमम यूटिलाइज करके ये कुंभ मेले में भाग करके उसका जीवन सार्थक बनाना चाहिए। और मतलब और एक बात है कि इधर ब्रह्मा कुमारी हम लोग आने के टाइम एक एक चीज दिखाया था। अभी हमारा मठ में आने वाला हर व्यक्ति लोगों को भी हम लोग उपदेश कम से कम 10 से 15 साल से पहले ही बोलता हूँ। दुष्ट लोगों ने भी अच्छा लोगों ने भी एक ही मनुष्य के साथ ही है, वो जानकर हम करना वाला काम अच्छा करेगा तो वो शुद्ध होगा, कपट में करेगा तो वो दुष्ट चिंता होगा। वैसा नहीं करने का एक रूप से करना चाहिए, वैसा हम लोग उपदेश। वैसा इधर एक एक ब्लॉक में एक एक चीज हमको दिखाया था, कैसा होना चाहिए मनुष्य, उसका चिंतन कैसा है, और काम का बारे में और झंझट का कार्य में, और अच्छा होने का रास्ता कैसा है, गलत होने का रास्ता कैसे, पूरा दिखाया था। वो एक व्यक्ति को देखने के टाइम वो क्या क्या गलत किया है ना, वो देखकर उसको मालूम पड़ेगा मेरा भी मन में ऐसा वाला राक्षस बैठा है, वो हम छोड़ने का, हम अच्छा वाला रास्ते में जाने का। हम लोग बात में बोलेंगे तो उसको नहीं मालूम पड़ेगा। तो पहले गुरुजी बताया था, एक बच्चे का पिक्चर दिखा के वो एलिफेंट कौन सा बताएंगे तो सिर्फ उसको एलिफेंट बोलने के लिए वो दिखाता है, नहीं तो उसको नहीं दिखाने को होगा, बच्चा आता ना। वैसा ही मनुष्य में भी इतना बड़ा उम्र होगा तो भी गलत होते, तो वो देखने के टाइम उनका जीवन में कुछ ना कुछ तकलीफ है तो गड़बड़ है, तो वो देखकर सोच के उनमें बैठा वाला राक्षस को हटा देना चाहिए। वो एक पार्ट इधर ब्रह्मा कुमारी से इधर किया वाला एग्जीबिशन में सबको मिला है। और ब्रह्मा कुमारी से हम परिचय है, मतलब वो उधर बैंगलोर पे हमारा जुड़े हुआ था, उनसे मुलाकात बात पूरा होते अच्छा सा पूरा सत्य में जानकर आत्मा को शुद्धि करना चाहिए, गलत नहीं करना चाहिए, सीधा रास्ते से जाना चाहिए, वैसा वाला उपदेश करके किसी को भी दुख किसी के भी दुष्ट नहीं करके सीधा रास्ते में जाते। मैसूर में भी हम ब्रह्मा कुमारी जी को मिला था, उनको अच्छा लगा, इधर भी आकर वो पूरा देखकर बहुत अच्छा लगा। तो आपने बहुत अच्छा अपना अनुभव बताया। माता जी, मैं आपसे एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि आज का जो हमारा जनरेशन है, जैसे हमारे इंडिया में यूथ सबसे ज्यादा है पॉपुलेशन, तो हमारे इंडिया में ये यूथ की जो ताकत है, तो इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप क्या महाराज जी से और आपसे कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे यंग जनरेशन को और हमारे पूरे भारतवर्ष के लोगों को, विश्व
विश्व के जो लोग हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मतलब अभी क्या है ना, पूरा लोगों ने सोशल मीडिया में ही है। सोशल मीडिया चाहिए नहीं चाहिए ऐसा मैं नहीं भूलता हूँ, मतलब यूटिलाइज करना जगह में सिर्फ यूटिलाइज करने का, पूरा सोशल मीडिया में जाकर वो देखकर हम हमारा जीवन में भी फॉलो करेगा तो वो ठीक नहीं है। तो आधुनिक धर्म का संस्कृति का परिपालन करेंगे तो तब तो ही हम जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा, जी नहीं तो नहीं आगे बढ़ जाता है। वो जस्ट हमको क्या जीवन के जाने के लिए एक रास्ता है, वही तो हमारा सिर्फ वो बस और कुछ नहीं है ऐसा मत सोचने का। जी प्रार्थना संस्कृति और हमारा परंपरा संस्कृति होता है, हम छोटे बच्चे होने के तक बड़े उम्र होने तक हमको घर से माँ पिता और कोई तो हमको हमको बता देते हैं वैसा रास्ते में जाना चाहिए, वो थोड़ा हम लोग दिमाग में रखकर आगे बढ़ना चाहिए। जी गलत रास्ते जाकर गलत गलत देखकर फायदा नहीं है। जी सोशल मीडिया में बहुत आता है, अच्छा भी आता है, वो नहीं लेता है। फास्ट में जाने के लिए विचार करता है, फास्ट में जाने तक हम किधर पहुंचते हैं उसके बारे में, हम ऊपर जाएगा नीचे जाएगा वो नहीं सोचता है। आगे बढ़ने का सोच के जाते 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 दूसरे अलग अलग रास्ता में जाते हैं। फिर लास्ट में अंतिम में उसको मालूम पड़ता है मैं जाना वाला रास्ता ठीक नहीं है, ठीक नहीं, तो उस टाइम वो पूरा खो जाता है। खो ऐसा जाता है। नहीं जाने देने का, हम सोच कर हमारा जीवन सार्थक में देना चाहिए। जी स्वामी जी, माता जी आप हमारे शो पे आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी जो ज्ञान की चिट चैट हुई, चर्चा हुई, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप शो पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, जैसा कि आपने सुना कि शिव और शक्ति, शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। और सोशल मीडिया के ज़माने में हम जी रहे हैं। सोशल मीडिया को तो यूज़ करना ही है और साथ में रियल सोशल लाइफ भी जीनी है। दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ आज के प्रोग्राम को हम विराम देंगे और अगले एपिसोड में फिर किसी महान आत्मा से मुलाकात होगी, इसी प्रकार ज्ञान की चर्चा होगी। तब तक के लिए नमस्कार।